श्रीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतंसप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषं भजे। आयुः परं वपुरभीष्टमतुल्यलक्ष्मीर्द्योर्भूरसा सकलयोगगुणास्त्रिवर्गः ज्ञानं च केवलमनन्तभवन्ति तुष्टात् त्वत्तो नृणां किमुसपत्नजयादिरासीः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं पंचमः स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीराजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मारामः कथं मुने गृहे रमतयन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। प्रियव्रतो भागवत आत्मारामः कथं मुने गृहे रमतयन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। ननूनं मुक्तसङ्गानां तादृशानां द्विजर्षभः गृहेष्वभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति। महतां खलु विप्रसे उत्तमश्लोकपादयोः छायानिर्वृतचित्तानां न कुटुम्बे स्पृहा मतिः। संशयोऽयं महान् ब्रह्मन् दारागारसुतादिषु सक्तस्य यत्सिद्धिरभूत् कृष्णे च मतिरच्युता। श्रीशुक उवाच बाढमुक्तं भगवत उत्तमश्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्दमकरन्दरस आवेशितचेतसो भागवत परमहंसदयितकथां किञ्चित् अन्तराय विहितां स्वां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति। यर्हि वावः स राजन् स राजपुत्रः प्रियव्रतः परमभागवतो नारदस्य चरणोपसेवयाञ्जसावगत परमार्थसतत्त्वो ब्रह्मसत्रेण दीक्षिष्यमाणो वनितलपरिपालनायां नाथप्रवणगुणगणैकान्तभाजनतया सुपित्रोपामन्त्रितो भगवति वासुदेव एवाव्यवधानसमाधियोगेन समावेशितसकलकारकक्रियाकलापो नैवाभ्यनन्दत्। यद्यपि तदप्रत्याम्नातव्यं तदधिकरण आत्मन्योन्यस्मान् असतोऽपि पराभवन्वीक्षमाणः। अतः भगवान् आदिदेव एतस्य गुणविसर्गस्य परिबृंहणानुध्यायनव्यवसित सकल जगदभिप्राय आत्मयोनिरखिल निगमनिजगण परिवेष्टितः स्वभवनादवततार सतत्र तत्र गगनतल उडुपतिरिव विमानावलिभिरनुपथ ममर परिवृढैरपि पूज्यमानः पथि पथि च वरूथ सह सिद्ध गंधर्व साध्यचारण मुनिगणैः रूपगीयमानो गन्धद्मादनद्रोणी भवभासयन्नुपससर्प। तत्र वाव एनं देवर्षिर्हंसयानेन पितरं भगवन्तं हिरण्यगर्भमुपलभमानः सहसैवोत्थायार्हणेन सह पिता पुत्राभ्याम् अवहिताञ्जलि रूपतस्थे भगवानपि भारत तदुपनीतार्हणः सूक्तवाक्येनातितरामुदितगुणगणावतार सुजयः प्रियव्रतमादिपुरुषस्तं सद हयासावलोक इति होवाच। श्रीभगवानुवाच निबोधतादेदमृतं ब्रवीमि मासूयतं देवमर्हस्य प्रमेयं वयं भवस्थे तत एषं महर्षिर्वहाम सर्वे विवसाय सदिष्टं न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मरीषया वा नैवार्थधर्मैः परतस्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद्विभूयात्। भवाय नाशाय च कर्म कर्तुर्शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुःखाय च देहयोगम् अव्यक्तदिष्टं जनतांग धत्ते। यद्वाचितन्त्यां गुणकर्मदामभिः सुदुस्तरैर्वत्सवयं सुयोजिता सर्वे वामो बलिमीश्वराय प्रोतान् श्रीवद्युपते चतुष्पदा। ईशा विसृष्टं यवरुन्धमहिङ्ग दुःखं सुखं वा गुणकर्मसङ्गात् आस्थाय तद्यद्युङ्क्तनाथश्चक्षुस्मतान्धा इव नीयमानः। युक्तोऽपि तावद्विवृद्ध्यात् स्वदेहमारब्धमश्नन्नभिमानशून्यः यथानुभूतं प्रतियात निद्रा किं तन्यदेहाय गुणान्न वृङ्क्ते। भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् इतस्य यास्ते सहसट्सपत्न जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यं। यः षट्सपत्नान् विजिगीषमाणो गृहे सुनिर्विश्यते पूर्वं हत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जितारिं क्षीणे सुकामं विचरेत् विपश्येत्।
त्वं तब्जनाभाङ्घ्रिसरोजकोश दुर्गाश्रितो निजित षट्सपत्ना मुङ्क्षेय भोगान् पुरुषातिदिष्टान् विमुक्तसङ्गा प्रतिं भजस्व। श्रीशुक उवाच इति समभिहितो महाभागवतो भगवतस्त्रिभुवन गुरोरनुशासनमात्मनो लघुतया नवत शिरोधरो बाढमिति सबहुनमानम् उवाह। भगवानपि मनुना यथावत् उपकल्पितापचितिः प्रियव्रतनारदयो रविशम भविसमीक्षमाणयोरात्मसमस्थानमवाङ्गमन संक्षयमभ्यपहृतं प्रवर्तयन्नगमत्। मनुरपि वरेणैवं प्रतिसन्धितमनोरथः सुरर्षिवरानुमतेनात्मजगमखिल धरामण्डलस्थितगुप्तया आस्थाप्य स्वयमतिविषयविषविषलज्जलाशयाशाया उपरराम इति हवाव। स जगतीपतिरीश्वरेच्छया निवेशित कर्माधिकारोऽखिल जगद्बन्धध्वंसन परानुभावस्य भगवत आदिपुरुषस्याङ्घ्रियुगलानवरत्याधिधानुभावेन परिरन्धितकषायासयो वदापोऽपि मानवर्धनो दुहि महतां महीतलमनुशशास। अथ च दुहितरं प्रजापतेर्विश्वकर्मण उपयेमे बर्हिष्मतीं नाम तस्यामुहवाव। आत्मजानात्मसमानशीलगुणकर्मरूपवीर्योद्दारान्दसभावयां बभूव। कन्यां च यवीयसी मूर्जस्वतीं नाम आग्निध्रेद्मजिह्वयज्ञबाहु महावीर हिरण्यरेतो घृतपृष्ठसवनमेधातिथीति होत्र कवय एति इति सर्व एवाग्निनामानः। एतेषां कविर्महावीरः सवन इति त्रय आसन्नूर्ध्वरेतसस्त आत्मविद्यायाम् अर्भभावादारभ्य कृतपरिचयाः पारमहंसमेवाश्रममभजन्। तस्मिन्नु हवा उपशमशीला परमर्शया सकलजीवनिकाया वासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानां शरणभूतस्य श्रीमच्चरणारविन्दा विरत स्मरणा विगलित परम भक्ति योगानुभावेन परिभावितान्तर्हृदयाधिगते भगवती सर्वेषां भूतानाम् आत्मभूते प्रत्यगात्मन्येवात्मनस्तादात्म्यपविशेषेण समीयो। अस्यामपि जायायां त्रयः पुत्रा आसन्नुत्तमस्तामसो रैवत इति मन्वन्तराधिपतयः। एवमुपशमयायनेषु स्वतनयेष्वथ जगतीपतिर्जगतीर्बुधान्येकादश परिवत्सराणाम् अव्याहताखिल पुरुषकारसार संभृत दोर्दण्डयुगला पीडितमौर्वी गुडस्तनित विरमित धर्म प्रतिपक्षो बर्हिस्मत्याश्चानुदिनमेधमान प्रमोद प्रसृण यौषिण्य व्रीडा प्रमुषितः सावलोक रुचिरेक्ष्वेल्यादिभिः पराभूयमान विवेक युवान्नवबुद्ध्या बुद्ध्यमान इव महामना बुभुजे यावदवभासयति सुरगिरिमनुपरिक्रामन् भगवान् आदित्यो वसुधातलमर्धेनैव प्रतपत्यर्धेनावच्छादयति तदा हि भगवत् उपासनोपचिताति पुरुषप्रभवावस्तदने तदनभिनन्दन समोजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामीति सप्तकृत्वस्तरणिपनुमर्य क्रामद्वितीययुव पतङ्गः ये वा ऊह तद्रथचरणने विकृतपरिखातास्ते सप्तसिन्धव आसन् यत् एव कृताः सप्तभुवोद्दीपाः जम्बूप्लक्षसाल्मले कृशक्रौञ्च साकपुष्कर संज्ञास्तेषां परिमाणं पूर्वस्मात् उत्तर यथासङ्ख्यं द्विगुणमानेन बहिस्मर समन्तत उपलप्ताः क्षारोदेक्षुरसो दसुरो दक्षितो दक्षीरो ददधिमण्डो दशुद्धोदाः सप्त जलधया सप्तदीप परिखा इवाभ्यन्तरद्वीप समाना एकैकस्येन यथा पूर्वं सप्तस्वपि बहिर्द्वीपेषु पृथक् चरित उपकल्पितास्ते सुजंवादिषु बर्हिस्मती पतिरनुव्रता नात्मजाना नाग्निध्रेत्मजिह्वयज्ञभाव हिरण्यरेतो घृतपृष्ठमेधातिथीति होत्र संज्ञान ये यथा संख्येन एकैकस्मिन्नेकमेवाधिपतिं विदधते। द्वितरं चोर्जस्वतीं नामोशनसे प्रायच्छद्यस्यामासीत् देवयानी नाव्यकाव्यसुता नैवं विधा पुरुषकारौरोक्रमस्य पुंसां तदङ्घ्रिरजसाश्चित सद्गुणानां चित्रं विदूरविगत सगृदाददीत यन्नामधेयमधुना स जहाति बन्धं स एवमपरिमित बल पराक्रम एकदा तु देवर्षि चरणानुशयनानुपतित गुण विसर्ग संसर्गेण निर्वृतमितवात्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेदइदमाह। अहो असाध्वनुष्ठितं यदभिनिवेशिताहमिन्द्रियैर्विद्यार्चित विषम विषयान्दकूपे तदलमलममुष्यावनिताया विनोदमिरं मां धिक् धिक् इति गर्ह्याञ्चकार। परदेवता प्रसादादिगतात्म प्रत्यवमर्शेनानुप्रवृत्तेभ्यः पुत्रेभ्य इमां यथादायं विभज्य भुक्तभोगां च महिषीं मृतकमिव स महाविभूतिमपहाय स्वयं निहित निर्वेदो हृदि गृहीत हरिविहारानुभावो भागवतो नारदस्य पदवीं पुनरेवानुससार। तस्य वा हेते श्लोकाः प्रियव्रतकृतं कर्म को नु कुर्याद् विनिस्वरं यो नेमिनिं नैकरोच्छायां
गृहन् सप्तवारिधीन् भूसंस्थानं कृतं येन सरिद्गिरिवनादिभिः सीमा च भूतनिर्वृत्यै द्वीपे द्वीपे विभागसा भौमं दिव्यं मानुषं च महित्वं कर्मयोगजं यश्चक्रे निर्यौपम्यं पुरुषानुजनप्रिया। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कंधे प्रियव्रत विजय नाम प्रथमोऽध्याय। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वितीयोऽध्याय। श्रीशुक उवाच एवं पितरि संप्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान आग्निद्रो जम्बोद्वीपौकसा प्रजा औरसवद्धर्मा वेक्षमाणः पर्यगोपायत्। स च कदाचित् पितृलोककामः सुरवरवनिता क्रीडाचलद्रोण्यां भगवन्तं विश्वसर्यां प्रतिमाभृतपरिचर्योपकरण आत्मैकाग्र्येण तपस्व्याराधयां बभूव। तदुपलभ्य भगवान् आदिपुरुषः सदसि गायन्तीं पूर्वचित्तीं नामाप्सरसमभियापयामास। सा च तदाश्रमोपवनमतिरमणीयं विविध निबड निबिटपै विटपनिकार संश्लिष्ट पुरलतारूढ स्थल विहङ्गममिथुनैः प्रोच्यमानश्रुतिभिः प्रतिबोध्यमान सलिलकुक्कुटकारण्डवकलहंसादिभिर्विचित्रबुक्पगोजितामलजलाशयाकलाकरमुप बभ्राम। तस्याः सुललितमनमरपदविन्याससिगितविलासयाश्चानुपदं खड़खड़ाय मानरुचिरचरणाभरणस्वनमुपाकर्ण्यरतेव कुमारः समाधियोगेन मीलितनयन नलिन मुकुलयुगलमीषद्विकचय्यव चष्ट तामेवाविदूरे मधुकरीमिव सुमनस उपजगिरन्तीं दिवि जमनो नयनाह्लाददुःखैर्गतविहारव्रीडा विनायवलोक सुस्वराक्ष राक्षवयवैर्वनसनृणां कुसुमायुधस्य विदधतीं विपरं निजमुखविकलितामृता सवस आसभाषणामोदमदान्तमधुकर किरोकर निकरोधरे रोधेन द्रुतपदविन्यासेन मल्गुस्पन्दन स्तनकलस कबरभारऋषणां देवीं ततवलोकनेन विवृतावसरस्य भगवतो मकरध्वजस्य वसमुपनीतो जडवतीति होवाच। का त्वं चिकीर्षसि किं च किं मुनिवर्यशैले मायासि कापि भगवत् परदेवताया विज्ये बिभर्षिधनुषे सुहृदात्मनोऽर्थे किं वा मृगान् मृगयसे विपिने प्रमत्तान् बाडाविमौ भगवतः शतपत्रनत्रौ शान्तापपुङ्खरुचिरावतितिग्मतन्तौ कस्मै युगुङ्क्षसि मने चिरन्न विद्मा क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। शिष्या इमे भगवतः पठता पठन्ति गायन्ति सामसरहस्यमजस्रमीशं युष्मच्छिका विलुलिता सुमनो विवृष्टि सर्वे भजन्ति ऋषिगणा इव वेदशाखा वाचं परं चरणपञ्चतित्रीणां ब्रह्मण्यरूपमुखरां शृण्वाम तुभ्यं लब्धा कदम्बरुचिरङ्कविटम्बविम्बे यस्यामलातपरिधि क्वच वत्कलं ते किं संवृतं रुचिरयोर्द्विजदशृङ्गयोस्ते मध्ये कृशोभासि यत्र दृशिस्ततात्मे पङ्कोरुणाश्रभिरात्मविषाण ईदृक् येनाश्रमं सुभगते श्रुभिकरोषि लोकं प्रदर्शय सुहृत्तमतावकं मे यत्रत्य इत्थवरुषावयवावरूपूर्वौ अस्मद्विधस्य मन उन्नयनो बिभर्ति भगवद्भुतं सरसराससुधादिवक्त्रे कावात्मवृत्तिरदनाद्दविरङ्गवाति विष्णो कलास्य निमिषोन्मकरौ च कर्णौ उद्विग्नमीलयुगलं द्विजपङ्क्तिशोचि रासन्नभृङ्गनिकरं सर इन्मुखन्ते योऽसौ त्वया करसरोजहतः पतङ्गो दीक्षभ्रमन् भ्रमत एजयते क्षिणीमे मुक्तं न ते स्मरसि वक्रजटावरूथं कष्टो निलो हरति लम्पट एषनीवीं रूपं तपोधन तपश्चरतां तपोघ्नं ये तत्तुकेन तपसा भवतोपलब्धं चर्तुं तपोरहसि मया समित्रमह्यं किं वा प्रसीदति स वै भवभावनो मे न त्वां त्यजामि दयितं द्विजदेव दत्तं यस्मिन् मनोदृकविनो न वियाति लग्नं मां चारुशृङ्गर्षि नेतुमनुव्रतं ते चित्तं यतः प्रतिसरन्तु शिवाश्चिभ्यः। श्रीशुक उवाच इति ललनानुनयाति विशारदो ग्राम्य वै दग्धया परिभाषयातां विवदवधूं विवदमदिरधि सभाजयामास। सा च ततस्तस्य वीरयोधपतेर्बुद्धिशीलरूपवयाश्योद्धार्येण पराक्षतमनास्तेन सहायुतायुतपरिवत्सरोपलक्षणं कालं जम्बुद्वीपपतिना भौमस्वर्गभोगान् बुभुजे। तस्याम् आत्मजं स राजवर आग्निद्रोणाभिकिं पुरुष हरिवर्षेलावृतरम्यकहिरण्मय कुद्रभद्रास्वकेतुमालसंज्ञान्नव पुत्रान् अजनयत् सासुत्वाथ सुतान्नवा वत्सरं गृहं
एवापहाय पूर्वचित्तिर्भूय एवाजं देवमुपतस्थे आग्नेयद्रसुदास्ते मातुरनुग्रहादोत्पत्तिकेनैव संहनन बलोपेता पित्राविभक्ता आत्मतुल्यनामानि यथा भागं जम्बुद्वीपवर्षाणि विभुजो आग्नेयद्रोराजा तृप्ता कामानाप्सर समेवानुद्दिन मधिमन्यमानस्तस्या श्लोकतां श्रुतवीरवारुन्ध यत्र पितरो मादयन्ते सम्पदेते पितरिनव भ्रातरो मेरुधित्रुमेरुदेवीं प्रतिरूपां वक्रदृष्टिं लतां रम्यां श्यामां नारीं भद्रां देववीतिमिति संज्ञा नवोदवहन् स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे आग्नेयद्रवर्णं नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच नाभिरपत्यकामो प्रजया मेरुदेव्यां भगवन्तं यज्ञपुरुषमवहितात्मयजत तस्य वाव श्रद्धया विशुद्धभावेन यतः प्रवज्ञेषु प्रचरत्सो द्रव्यदेशकालमर्तन्मन्त्रत्विग्दक्षिणा विधानयोगोपपत्त्या दुरधिगमोऽपि भगवान् भागवत वात्सल्यतया सुप्रतीक आत्मानम् अपराजितं निजजनाभिप्रेत्यार्थविधित्सया गृहीत हृदयो हृदयङ्गमं मनोनयनानन्दावयवाभिराममाविश्चकार। अथ च तमाविष्कृतभुजयुगलद्वयं हिरण्मयं पुरुषविशेषं कविशकौशेयाम्बरधरमुरसि विलसच्छ्रीवत्सललामं दरवरवनरु हवनमालाच्छुर्यमृतमणिगणादिभिरुलप्लक्षितं स्फुटकिरणप्रवरमुकुटकुण्डलकटककटिसूत्रार्केयूरनूपराङ्गदभूषणभूषभूषित मृत्तिकसदस्यगृहपतयोधना इवोत्तमधनमुपलभ्य सबहुमानम् अर्हणेनावनत शीर्षाणम् उपतस्थुः। श्री ऋत्विद ऊचुः अर्हसि मुहुरर्हत्तर्मार्हणमस्माकम् अतुपथानां नमो नम इत्येतावत् सदुपशिक्षितं गौरहति पुमान् प्रकृतिगुण व्यतिकरमतिरनीश ईश्वरस्य परस्य प्रकृतिपुरुषयो रर्वाक्तनाभिर्नावरूपाकृतिभिरूपनिरूपणं सकलजननिकाय वृजिननिरसन शिवतम प्रवरगुणगणैकदेशकथनादृते परिजनानुरागविरचित शबल संशब्द सलिलसित किसलय तुलसिका दूर्वाङ्कुरैरपि संवृतया सपर्यया किल परम परितुष्यसि। अथानयापि न भवत इज्जयोरुभारभरया समुचितमर्थमिहोपलभामहे आत्मन इवानुसवन बञ्जसाभ्यतिरेकेण वो भूयमानाशेर्ष पुरुषार्थस्वरूपस्य किन्तु नाथासासानामेतदभिरसंदाधनमात्रं भवितुमर्हति। तद्यथा बालिशानां स्वयमात्मना श्रेया परं विदुषां परं परं पुरुषप्रकर्षकरुणया सुमहिमानं चापवर्गाख्यमुपकल्पयिष्यन् स्वयं नापचित एत एवैतरवधियोपलक्षिता। अथा यमेव परो विहर्यत्तम यरिबर्षि राजर्षेर्वरदर्शभो भवान् निज पुरुषेण क्षण विषय आसीत् असंग निशित ज्ञानानल विधूतासे समलाना भवत् स्वभावानामात्मा रामाणां पुनीनामरवरत परिगुणित गणगण परम मंगलायतन गुणगण कथनोऽसि। अथ कथंचित् स्खलन छुत्पतन जृंभण दुर्वस्थनादि सुव्यवसानां न स्मरणाय जन्मण दशायामपि सकल कसमल निरासनानि तव गुणकृतमनामधेयानि वचन गोचराणि भवन्तु। किंचायं राजर्षिरपत्यकामः प्रजां भवादृशी भवसासान ईश्वरमाशिषां स्वर्गापवर्गयोरपि भवन्तम् उपधावति। प्रजायामर्थप्रत्ययोधनद विवादना फलीकरणं को वा ईयते पराजितो पराजितया माययानवसितपदद्यानाभृतमतिर्विषय विसरसानाभृतकृतिरुपासितमहच्चरणः यदुहावाव तव पुनरदभ्रकरतरिह सम्माहूतस्तत्रार्धधियां मन्दानां नस्तद्येव हेलनं देवदेवार्हसिस्साम्येन सर्वान् प्रतिवोढुमविदुषां। श्रीशुक उवाच इति निगदेनाभीष्टूयमानो भगवान् निमिषर्षभो वर्षधराभिवादिताभिवन्दितचरणः सदयमिदमाह। श्रीभगवानुवाच अहो बताहमृषयो भवद्भिरभिथ गीर्भिर्वरमसुलभया याचितो यदुमस्यात्मजो मया सदृशो भूद्यादिति ममाहमेवाभिरूपाय कैवल्यात् तथापि ब्रह्मवादो न वृषा भवितुमर्हति मवैवहि मुखं यद्विजदेवकुलं तद् आग्निध्रिये जगल सकल यावतरिष्यात्मतुल्यमनुपलभामनः। श्रीशुक उवाच इति दिशामयन्त्या मेरुदेव्या प्रतिमभिध्यायान्तर्दधे भगवान् बर्हिषि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान् परमर्षिभिः प्रसादितो नाभे प्रियचिकीर्षया तदवरोधायने मेरुदेव्यां धर्मान् दर्शयितु कामो वातरशनानां श्रमणानां ऋषीणाम् ऊर्ध्वमन्थिनां शुक्लया तनुवावततार। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां
पंचमस्कंदे नाभिचरिते ऋषभावतारो नाम तृतीयोऽध्याय। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थोऽध्याय। श्रीशुक उवाच अतः तमुत्पत्त्यैव विद्यमान भगवल्लक्षणं साम्योपशमवैराग्यैश्वर्यमहाविभूतिभिरनुदिनमेधमानानुभावं प्रकृतयः प्रजा ब्रह्मणा देवताश्चावतिनलत नितलसमवयानायतितरां जगृधो तस्य वा इत्थं वर्ष्मणा वरीयसा बृहच्छलोकेन चौजसा बलेन श्रिया यशसा वीरशौर्याभ्यां च पिता ऋषभ इति तं नाम चकार। तस्य इन्द्रः स्पर्धमानो भगवान् वर्षे नववर्ष तदवधार्य भगवान् ऋषभदेवो योगेश्वरः प्रस्यात्मयोगमायया स्ववर्षभजनाभं नामाभ्यवर्षत। ताभिस्तु यथा विलस्तो विलसितं सुप्रजस्त्वम् अवरुध्याति प्रमोदपरविह्वलो गदारक्षया किरास्वैरं गृहीतनरलोकसधर्मं भगवन्तं पुराणपुरुषं मायाविलसितमतिवर्षता तेति सानुरागमुपलालयन् परानिवृत्तिमुपगतः विदितानुरागमापौरप्रकृतिजनपदो राजानाभिरात्मजं समयसेतुरक्षायामभिषिच्य ब्राह्मणे सूपनिधाय समेरुदेव्यां विशालायां प्रपन्ननिपुणेन तपसा समाधियोगेन नारायणाख्यं भगवन्तं वासुदेवमुपासीना कालेन तन्महिमानम् अवाप। यस्य पाण्डवे श्लोका उदाहरन्ति को नु तत्कर्म राजर्षेर्नाभेरन्वाचरेत् पुमान् अपत्यतामगाद्यस्य हरिशुद्धेन कर्मणा ब्रह्मण्योऽन्याकुतो नाभेर्विप्रा मङ्गलपूजिताः यस्य बर्हिषि यज्ञेशं दर्शयामासुरोजसा। अतः भगवान् ऋषभदेवः स्ववर्षं कर्मक्षेत्रमनुमन्यमानः प्रदर्शित गुरुकुलवासो दब्धपरैर्गुरुभिरनुज्ञातो गृहमेधिनां धर्माननुशिक्ष्यमाणो जयन्त्यामिन्द्रदत्तायां भयलक्षणं कर्म समाम्नायां नात्मविजनात्मजानामात्मसमानानां शतं जनयामास। येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठगुण आसीत् येनेदं वर्षं भारतम् इति व्यपदिशन्ति तमनुकुशावर्त इलावर्तो ब्रह्मावर्तो मलयः केतुर्भद्रसेन इन्द्रस्पृग् विदर्भः कीकट इति नवनवति प्रधानाः। कविर्हरिरन्तरिक्षा प्रबुद्धा पिप्पलायनः आविर्होत्रोऽथ द्रुमलश्चमसक्रभाजना तिथि भागवत धर्मदर्शनातो भागवतास्तेषां सुचरितं भगवन् महिमोपवृङ्गितं वसुदेव नारद संवादमुपशमायनमुपरिष्टाद् वर्णयिष्यामः यवीयांस एकाशीतिर् जायन्ते या पितुरादेशकरा महाशालिना महाश्रोत्रिया यज्ञशीला कर्मविशुद्धा ब्राह्मणा बभूवो। भगवान् ऋषभ संज्ञ आत्मतंत्र स्वयं नित्य निवृत्तानर्थ परंपरा केवलानंदानुभव ईश्वर एव विपरीतवत्कर्माण्यारभमाणा कालेनानुगतं धर्ममाचरेणोपशिक्षयन् न तद्विदां सम उपशान्तो मैत्रः कारुणिको धर्मार्थ यसा प्रजानन्दामृतावरोधेन गृहे श्लोकं नियमयत् यच्छीष्णयाच्चरितं तत्तत् अनुवर्तते लोकः यद्यपि स्वविदितं सकलधर्मं ब्राह्मं गुह्यं ब्राह्मणैर्दर्शितमार्गेण सामादिभिरुपायैर्जन्तां ससास द्रव्यदेशकालवया श्रद्धत्वेक विविधोद्देशोपचितैः सर्वैरपैः कृतुर्भिर्यदोपदेशं सतकृत्वैयाज भगवतर्षभेण परिरक्ष्यमाण एतस्मिन् वर्षे न कञ्चन पुरुषो वाञ्छन्त्य विद्यमान विवात्मनोऽन्यस्मात् कथञ्चन किमपि कर्हिचिदवेक्षते भर्तर्यनुसवनं विजिम्बितस्नेहातिशयमन्तरेण सगदाचिद् चिदटमानो भगवान् ऋषभो ब्रह्मावर्तगतो ब्रह्मर्षि प्रवरसभायां प्रजानां निशामयन्ति नात्मा जजानवहितात्मना प्रश्रय प्रणय भरसुरयन्त्रितान्नप्युशिक्षयन्निति होवाच। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्यां संहितायां पंचमस्कंधे चतुर्थोऽध्याय। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचमोऽध्याय। श्री ऋषभ उवाच नायं देहो देहभाजां निलोके कष्टान् कामान् हर्हते विड्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तं महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्तेस्तमोद्वारं योषितां संगिसंगं
महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये वा मयि से कृतसौहृदार्था जनेषु देहम्बरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मचरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च लोके नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रियप्रीतय आपृणोति न साधु मन्ये यत आत्मनो यन्मसन्नपि क्लेशद आसदेह पराभवस्तावदवबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रिया तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्ध एवं मनं कर्पवशं प्रयुङ्क्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवेन मुच्यते देहयोगेन तावत् यदा न पश्यत्यते यथा गुणेऽहं स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चित् गतस्मृतिर्विन्दति तत्र तापान् आसाद्य मैथुन्यमगारमज्ञः पुंसः स्त्रियां भावमेतं तयोर्मिथो हृदयग्रन्थिमाहु अथो गृहक्षेत्रस्वाप्तवित्तैर्जनस्य मोहो यमहं ममेति यदासनो हृदयग्रन्थिरस्य कर्मानुबन्धो दृढ आश्लथेत तदा जनः सम्परिवर्तते स्मात् मुक्तः परं यात्यति हाय हेतुं हंसे गुरौ मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वन्द्वतिदीक्षया च सर्वर्तजन्तुर्व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसेहा निवृत्त्या मत्कर्मभिर्म कथया च नित्यं मध्येव संगात् गुडकीर्तनान्मे निर्वैरसाम्योपशमेन पुत्रा जिहासया देहगेहात्मबुद्धे अध्यात्मयोगेन वियुक्त सेवया प्राणेन्द्रिया बीजयेन सद्र्यक्सध्यद्रया ब्रह्मचर्येण सस्वत् असप्रमादेन येन वाचां सर्वत्र मद्भाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन योगेन धृद्योद्यत सत्वयुक्तो लिहं लिंगं यमोपेत कुशलोहमाख्यं कर्मास्यं हृदयग्रन्थिबन्ध मविद्यया साधितमप्रमत्तः नेन योगेन यथोपदेशं सम्यग् व्यपोह्यो परमेत योगात् पुत्रांश शिष्यांश नृपः गुरुर्वा मल्लोक कामो मदनुग्रहार्था इत्थं विपन्योरनुशिष्यात् तज्ज्ञान न योजयेत् कर्मसु कर्म मूढान् कम योजयन् मनुजोर्थं लभेत निपातयन् नष्टदृशं हि गर्ते लोका स्वयं श्रेयसि नष्टदृष्टिर्योर्थान् समीहेत निकाम कामः अन्योन्यवैरासुकलेश हेतोरनन्त दुःखं न च वेद मूढः कस्तं स्वयं तदभिज्ञोपश्चित् अविद्यामन्तरे वर्तमानान् दृष्ट्वा पुनस्तं सगृणाकुबुद्धिं प्रयोजयेत् त्वत्पथकं यथान्धम् गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न सत्तस्यान् न पतिश्च सस्यान् न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम् इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सत्त्वं हि मे हृदयं यत्र धर्म पृष्ठे कृतो मे यदधर्म आरात् अतो हि मां ऋषभं प्राहुरार्या तस्माद् भवन्तो हृदयेन जाता सर्वे महीयान् सममुं सनाभम् आक्लिष्टबुद्ध्या परतं भजध्वं शुश्रूषणं तत् भरणं प्रजानां भूतेषु वीरोऽभ्य उदोत्तमाये सरीसृपास्तेषु सबोध ततो मनुष्या प्रमथास्ततोऽपि गन्धर्वसिद्धा विबुधानुगाये देवासुरेभ्यो मघवत्प्रधाना दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तुते भव परसोऽथ विरिञ्च वीर्य समत्परोऽहं द्विजदेवदेव न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्रा किमता परन्तु यस्मिन् लिभे प्रहुतं श्रद्धयाः मस्नामि कामं
न तथाग्निहोत्रे धृता तनूरुक्षति मे पुराणी येनेह सत्वं परमं पवित्रं समोदम सत्यमनुग्रहश्च तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र मत्तोऽप्यनन्तात् परतः परस्मात् स्वर्गापवर्गाधिपतेर्न किञ्चित् येषां किमुस्यादितरेण तेषाम् अकिञ्चनानां मयि भक्तिभाजां सर्वाणि मध्येष्ण्यतया भवद्भिः चराणि भूता निसुता ध्रुवाणि सम्भावितव्यानि पदे पदे वो विविक्तदृग्भिस्तदुदर्हणं मे मनोवचोद्रे कर्णे हितस्य साक्षात्कृतं मे परिबर्हणं ये विना पुमान्ये न महाविमोहात् कृतान्तपासान् न विमोक्तुमीसे। श्रीशुक उवाच एव मनुष्यास्यात्मजान् स्वयमनुशिष्टान् अपि लोकानुशासनार्थं भवानुभावः परमसद्भगवतान् ऋषभादेश उपशमशीलामनुव्रतकर्मणां महामुनीनां भक्तिज्ञानवैराग्यलक्षणं पारमहंस्य धर्मोपशिक्षमाणा स्वतनयशत ज्येष्ठं परं भागवतं भगवज्जनपरायणं भरतं धरणिपालनायाभिषिच्य स्वयं भवन एवोर्वरित शरीरमात्र परिग्रह उन्मत्त इव गगनपरिधान प्रकीर्णकेश आत्मन्यारोपिता हवनीयो ब्रह्मावर्तात् प्रवव्राज जडान्धमूकबधिर पिशाचोन्मादकवद अवधूतवेशो विधास्य पाणोऽपि जनानां गृहीतमौनवव्रतस्तु श्रीं बभूव तत्र तत्र पुरग्रामाखरखेट वाट खरवट शिबिर व्रज घोष सार्थ गिरिवनाश्रमादिस्वनुपथमवनी चरापसदैः परिभूयमानो मक्षिका बिरिवन गजस्तर्जन ताडवान मेह नष्ठी वनग्रावसकृतत् रजः प्रक्षेपपूतिवात दुरुक्तैस्तदविगणयन्नेवासस्वात संस्थान एतस्मिन् देहोपलक्षणे सदपदेश उभयानुभवस्वरूपेण स्वमहिमावस्थानेन समारोपिताहम् अभिमान त्वादविखण्डितमनाः पृथ्वीमेकचरः परिबभ्राम अधिसुकुमार करचरणोपरथ स्थल विपुल बाह्वंसकलवदनाद्य वयविन्यास प्रकृति सुंदर स्वभाव हासा सुमुखो नवनिलत दलायमान शिशिर तारारुणायतनयन रुचिरः सदृश सुभग कपोल कर्णकण्ठनासो विगूढस्मित वदन महोत्सवेन पुरतवितानां वनसि कुसुमसरासन उपदधानः परागवलम्बमान कुटिल जटिल कपिसकेश भूरि भारो बधूत मलिजिन निज शरीरेण ग्रहीत इवादृश्यत यर्हि वाव स भगवान् लोकमिमं योगस्याद्धा प्रतीपमिवाचक्षाणस्तत्प्रतिक्रियाकर्म बिभत्सरितमित व्रत माजगर्मास्थितः स्यान एवाश्नाति पिबति खादति अवमेहति हृदति स्म चेष्टमान उच्चरित आदिग्धोद्देशः तस्य यः पुरीश सुरभि सौगन्ध्यवायुस्तं देशं दशयोजनं समन्तात् सुरभिं चकार एवं गोमृगकाकचर्यावजंस्तिष्ठन्नासीना काकमृगगोचरिता पिबति खादति अवमेहति स्म इति नागा योगचर्याचरणो भगवान् कैवल्यपतिर्षभो विरतमरमहानन्दा भुव आत्मनिर्भर सर्वेषां भूतानामात्मभूते भगवति वासुदेव आत्मन्नो व्यवधानान्तरोदरभावेन सिद्ध समस्तार्थ परिपूर्णो योगैश्वराणि वैहा समनोजवान्तर्धान प्रक्राय प्रवेश दूरग्रहणादीनि यदर्क्ष्योपगतानि नाञ्जसा नृपहृदयेनाभ्यनन्दत् स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे ऋषभदेवान् चरितेनां पंचमोऽध्याय श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। षष्ठोऽध्याय श्री राजोवाच ननूनं भगव आत्मा रामाणां योगसमीरितज्ञानावभर्जित कर्मबीजानाम् ऐश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि भवितुमर्हति यदृच्छयोपगतानि। श्रीऋषिरुवाच सत्यमुक्तं कित्विह वा एकेन मनसोद्धा विश्रम्भवनमवस्थानस्य षट्किरात इव सङ्गच्छन्ते तथा चोक्तं
न कुर्यात् करिचित् सख्यं मनसे येन वस सुरात्मन्यान् मानसमं व्यवहितमनर्थान्तर्भावेन वीक्षमाणो परतान् प्रतिरूपरमाम तस्य वा एवं मुक्तलिङ्गस्य भगवत ऋषभस्य योगमाया वासनया देह इमां जगतीम् अभिमानाभासेन संक्रमणा कोङ्कवेङ्कुटकान् दक्षिणकर्णाटकान् देशान् दृच्छोपगतः कुटकाचलोपवन आसकृता स्मबल मकबल उन्माद मुक्तमोधजो संवीत एवं विचचार अथ समीर वेग विधूत वेणु विकसृण जातो गिरतावानल स्तमल स्तनल माले स्तवदन वाले लिहाना सहतेन ददाह यस्य किलानुचरितम् उपाकर्ण्य कोङ्कवेङ्कुटकानां राजार्हन्नामोपशिक्षकलावधर्मोत्कृष्य माडे भवितव्येन विमोहिता सुधर्मपथमकुतो भयमपहाय कुपथपाखण्ड मसम्मजस समञ्जसं निजमनीषया मंद संप्रवर्तयिष्ये येन वावकलौ मनुजापसदा देवमाया मोहिता स्वविधि विधिनियोग शौच चारित्र विहीना हे देव हेलनान्यपव्रतानि निज निजेच्छया गृह्णाना अस्नानानाम् आचमनानां शौचकेशोत्लुच्चनादीनि कलिना धर्म बहुले नोपहृत धियो ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञ पुरुषलोक विदूषकाः प्रायेण भविष्यन्ति ते च यर्वाक्तनयानि च लोकयात्रयान्ध परम्परया स्वतास्य तमस्यन्दे स्वयमेव प्रपतिष्यन्ति अयम् अवतारो रजसो पप्लुत कैवल्योपशिक्षणार्थ तस्यानुगुणान् श्लोकान् गायन्ति अहो भुवः सप्त समुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेष्वधि पुण्यमेत गायन्ति यत्र त्यजना मुरारेः कर्माणि भद्राण्यवतारवन्ति अहोनुवंशो यशसा वदात प्रय्यव्रतो यत्र पुमान् पुराण कृतावतार पुरुष स आद्यश्चचार धर्मं यद कर्म हेतुं कोन्वस्य काष्ठाम् अपरोनुगच्छेन् मनोरथेनाप्यभवस्य योगो यो योगमाया स्पृहयत्युदस्ता यसत्तया येन कृतप्रयत्नाः इति हस्म सकल वेद लोक देव ब्राह्मण गवां परम गुरोर्भगवत ऋषभाख्यस्य विशुद्धाचरितमीरितं पुंसां समस्त दुश्चरिताभिहरणम् परम महामंगलायनमिदमनुश्रद्धयोपचितयानुशृणोत्या वा श्रावयति वा वहितो भगवति तस्मिन् वासुदेव एकान्ततो भक्तिरनयोरपि समनुवर्तते यस्याम् एव कवय आत्मानम् अविरतं विविधवृजिन संसार पारितापोपतप्यमानमनुसवनं स्नापयन्तस्तयैव परया निर्वृत्या यपवर्गमात्यन्तिकं परमपुरुषार्थमपि स्वयमासादितं नो एवाद्रियन्ते भगवद्गीत्येनैव परिसमाप्त सर्वार्था राजन् पतिर्गुरुरलं भवतां यदूनां दैवप्रियकुलपति क्वच किङ्करो वा हस्त्वेव मंग भगवान् भजतां मुकुन्दो मुक्तिं ददाति करिचित् स्मन भक्तियोगम् नित्यानुभूत निजलाभनिवृत्त तृष्णा श्रेयस्य रचनया चिरसोक्त बुद्धे लोकस्य य करुणया भयमात्मलोकम् आख्यान्नमो भगवते ऋषभाय तस्मै। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते नाम षष्ठोऽध्याय श्रीबालकृष्णचरणकमलार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितलपरिपालनाय संचिन्तितस्तदनुशासनपरः पञ्चजनीं विश्वरूपदुहितरमुपयेमे तस्यामुहवा आत्मजान् कार्ष्णेनानुरूपात्मनः पञ्चनयामास भूतादिर्भूतसूक्ष्माणि सुमतिं द्राष्ट्रभृतं सुदर्शनम् आवरणं धूम्रकेतुम् इति अजनाभं तामैतद्वर्षं भारतम् इति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति स बहुविन्महीपति पितृपितामह वधुरुतवत्सलतया स्वे स्वे कर्मणि वर्तमाना प्रजा सुधर्मं वर्तमानः परिपालयति जे च भगवन्तं यज्ञकृतरूपं कृतभिरुच्चावचैः श्रद्धया हृताग्निहोत्रसदशपूर्णमास चातुर्मास तपस्सोमानां प्रकृतिविकृतिभिरनुसवनं चातुर्होत्रविधिना तसं प्रचरत्सु नानायागेषु विरचिताङ्क्रियेष्व पूर्वं यत्तत्क्रियाफलं धर्माख्यम् परे ब्रह्मणि यज्ञपुरुषे सर्वदेवतालिङ्गानां मन्त्राणाम् अर्थनियामकतया साक्षात्कर्तरि बलदेवतायां भगवति वासुदेव एव भावयमान आत्मनैपुण्यमृदितकषायो हविस्वध्वर्यो निर्गृह्यमाणेषु सयजमानो यज्ञभागो देवांस्तान् पुरुषावयवेष्वभ्यध्यायत् एवं कर्मशुद्ध्या विशुद्धसत्त्वस्यान्तर्हृदयाकाश शरीरे ब्रह्मणि भगवति वासुदेवे महापुरुषरूपोपलक्षणे श्रीवत्सकौस्तुभ वनमालाद्वलमालारी दर गदादिभिरुपलक्षिते निज पुरुष हृल्लिखतेनात्मनि पुरुषरूपेण विरोचमान उच्चैस्तरां भक्तिरुनिधनमेध मानरया जायत एवं वर्षायतु सहस्रपर्यन्तावश्यत कर्म निर्वाणावसरोधि भुज्यमानं स्वतनयेभ्यो रिक्तं पितृपैतामहं यथादायं विभज्य स्वयं सकल सम्पन्निकेतान् स्वनिकेतात् पुलहाश्रमं प्रवव्राज यत्र भाव भगवान् हृद्यापि तत्रत्यजानां निर्जनानां वात्सल्येन सन्निधाप्यत इच्छारूपेण यत्राश्रमपदान्युभयनो भयतो नाभिर्दृशश्चक्रैश्चक्रनदीनां स्मृत्प्रवरा सर्वतः पवित्रीकरोति तस्मिन् वाव किल स एकलः पुलहाश्रमोपसवने विविधकुसुमकुसुकिसलय तुलसिकाम्बुभे कन्दमूलफलोपहारैश्च समीहमानो भगवत आराधनं विविक्त अपरतविषयाविलास उभृतोपशमः परां निवृत्तिमवाप दयेत्थमविरतपुरुषपरिचर्यया भगवति प्रवर्धमानानुराग नागभरद्रुतहृदयस्थैल्या प्रसवेने वेगेनात्मन्युद्भिद्यमान रोमपुलककुकुलक औत्कण्ठ्यप्रवृतप्रणयवास्मनिरुद्धावलोकनयन एवं निज रमणारुणचरणारविन्दानुध्यान परिचित भक्तियोगेन परिप्लुत परमलाह्लाद गंभीर हृदय हृदावगाठधिषणस्तामपि क्रियमाणायां भगवत्सपर्यायां सपर्यां न सस्मार इत्थं धृत भगवद्व्रत ऐणेया निज जनावास सानुवसनाभिषेकार्ध कपिशकुटिल जटाकलापेन च विरोचमाना सुरचां भगवन्तं हिरण्मयं पुरुषमुज्जीयाने सुरमण्डलेभ्यो व्युपतिष्ठन् एतद्हुवाच परो रज सवत्युर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सुरेत सादा पुनराविश्यचष्टे हंसं गृध्राणं नृषदृङ्गिरामिम। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे भरतश्रीजिते भगवत्परिचर्यायां सप्तमोऽध्याय। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टमोऽध्याय। श्रीशुक उवाच एकदा तु महानद्यां कृताभिषेक नैयमिकावश्यको ब्रह्माक्षरमय विगृणानो मुहूर्तत्रयमुदकान्त उपविवेश तत्र तदा राजन् हृणीपिपासया जलाभ्ययास जलाशयाभ्यास मे वै बोप जगाम तया पेपीयमानोदके तावे देवा विदूरेण दत्तो मृगपतेरुन्नादो लोकभयङ्कर उदपतत् तमुपश्रुत्य सा मृगवधूः प्रकृतिविक्लवा चकित निरीक्षणास्त्रामपि हरिभयान् विनेशितव सेभ्यग्रहृदया पारिप्लवत दृष्टिरगत तृषा भयात् सहसैवोच्चक्राम तस्या उत्पतन्त्या अन्तर्वन्त्या उर्भयावगलितो यो निर्गृहतो गर्भः स्रोदसी दीपपदात् तत्प्रसोपसर्पण भयखेदातुरा स्वगणेन वियुज्यमान कश्चात् जित्तर्यां कृष्णसारसती निपपाताथ च
ममार तं तेन कुडकं कृपणं स्रोतसानोह्यमानमभिवीक्ष्यापविद्धं पदुरिवानुकम्पया राजर्षिर्भर्त आराय मृतमातरमित्याश्रमपदमन्यत्तस्य ह वा एडकुडक उच्चैरे तस्मिन् कृतनिजाभिमानस्यार्हतस्तत् पोषण पालन लालन प्रीणन अनुध्याये नात्मनियमाः संयमाः पुरुषपरिचर्यादय एकैकसा कतिपयेनार्हर्गणेन विद्यमाना किल सर्व एवोदवसदन् अहो बतायं हरिणकुडकः कृपण ईश्वरस्तरचरण परिभ्रमणरेण स्वगण सुहृदपद्भ्यः परिवर्जितः शरणं च मोपसादितो मावेव माता पितरौ भ्रातृज्ञातीन् यौथिकांश्चैवोपयाय नान्यं कञ्चन वेद मह्यति विस्रब्धश्चात एव मया मत्परायणस्य पोषण पालन प्रीणन लालन नमन लालन मन सुयुनुष्ठा नानुष्ठेयं शरण्योपेक्षादोष विदुषा नूनं ह्यार्या साधव संशैलाः कृपणसुहृद एवं विद्यार्थे स्वार्थानपि गुरून् तरान् उपेक्षन्ते इति कृतान् संग आसन संयासनाष्ठानासनादिसह मृगजमुना स्नेहानुबद्ध हृदय आसीत् कुसुम कुसकुसुम समित पलास फलमूलोदकान्या हर्षमाण वृक्षालावृकादिभ्यो भयमासन् समानो यदा स हरिणकुडकेन कुडकेन वनं समाविशति पथिषु च मुक्तभावेन तत्र तत्र विषक्तमति प्रणयभर हृदयः कारण्यात् स्कन्देनोद्वहति मुत्सङ्गौ रसि चाधायोपललाय लालयं मुदं परमामवाप क्रियायां निर्वर्त्यमानायाम् अन्तरालेऽप्युत्थायोत्थाय यदैतेनमभिचक्षित तर्हि वावसवर्षपति प्रकृतिस्थेन मनसा तस्मा आशिष आशास्ते स्वस्तिस्तावत्स्यते सर्वत इति अन्यदा भृशमुद्विग्नमनादष्टद्रविण इव कृपणः सकरुणमतिवर्षेण हरिणकुडक विरह विबल विह्वल हृदयस्तन्तापस्तमेवानुशोचन किल कस्मलं मदभिरमित इति होवाच अपि बत स वै कृपण एडबालको मृत हरिणी मृसुदोः ममा नार्यस्य षटकिरात मतेरसकृत सुकृतस्य कृत विस्रम्भ आत्मप्रत्ययेन तदभिगणयन् सुजन इवागमिष्यति अपि क्षेमेडास्पि नाश्रमोपवने सस्पाडिचरतं देवगुप्तं द्रक्ष्यामि अपि नवृकः सालावृकोऽन्यतमो वा नैकचर एकचरो वा भक्ष्यति निम्लोचति भगवान् सकल जगत्क्षेमोदयस्त्रय्यात्ममाद्यापि मम न भृगवधून्यास आगच्छति अपि स्वित् अकृत सुकृतमागत्य मां सुख इष्यति हरिणराजकुमारो विविध रुचिर दर्शनीय निजमगर दारक विनोदय संतोषं स्वानाम् अपनुदन् छेलिकायां मामृषां समाधिना मेलिदृशं प्रेम संरम्भेण चिकित्सकत भागत्य प्रसद परुष विषाणाग्रेण लुठति आसादित विषिबर्हिषिदूषिते मयोपालब्धो भीता सपद्युपद परतरास ऋषिकुमार वदवहित कर्णकलाप आस्ते किंवा अरे आचरितं तपस्तपस्विन्यानया यदि मवनैः सविनय कृष्णसारतनयनत तनुत सुभग शिव तमाखर खुर पदपङ्क्तिभिर्द्रविण विधुरातुरस्य कवर्णस्य मम द्रविण पदवीं शोचन्त्यात्मानं च सर्वथा कृतकौतुकं द्विजानां स्वर्गापवर्गकामानां देवजनं करोति अपि स्विद् असौ भगवान् उड्पटिरेनं मृगपति भयान् मृतमातरं मृगबालकं स्वामृतमातरं मृगबालकं स्वाश्रम परिभ्रष्ट मनुकंपया कृपण जनवत्सला परिपाति किंबात्मज विश्ले सज्वरदव दहन शिखाभिरुपत्य नृप्यमान हृदयस्थल नलिनीकं मामुपसृतमगृह्यतनयं शिशिरशान्तानुराग गुणित निज वदन सलिला मृतमय गभिस्थिति स्वयधति अधीति च एवमघटमानस्तमनोरथो रथाकुलहृदयो मृगदारकाभासेन स्वारब्धमर्मणा योगारम्भणो बिभ्रंसिता स योगतापसो भगवत् आराधनलक्षणाच्च कथं मिथरथो जायन्तर एणकुडक आसङ्ग साक्षान्निःश्रेयसत प्रतिपक्षया प्राक्परित्यक्तस्तुस्त्यज हृदयाभिजातस्य तस्यैव हृदयाजातस्य तस्यैव भरतस्य राजर्षेर्
भरतस्य तावन् मृगार्भकपोषण पालन पीडन लालनानुसंगेण विगडयत आत्मानमविराहुबिलं तुरतिक्रमः कालः करालरभस आपद्यत तदानीम् अपि पार्श्ववर्तिनम् आत्मज विमानशोचन्तमभिवीक्षमाणो मृग एवा विनेवेशतमना विशिज्य लोकमिमं स मृगेण कलेवरं मृतमनुनमृतवजन्मादु स्मृतिरितरवन् मृग शरीरम् अवाप तत्रापि हवा आत्मनोमृत्वकारणं भगवन् आराधन समीहानुभावेनानुस्मृत्य भृशमनुतप्यमान आह अहो कष्टं भ्रष्टोऽहम् आत्मवताम् अनुपद्याद्य विमुक्त समस्त संगस्य मुक्त पुण्यारण्य शरणस्यात्मवत् आत्मनि सर्वेषाम् आत्मना भगवति वासुदेवे तदनुश्रवण मनन संकीर्तनाराधनानुस्मरणाभि योगेन शून्य सकलयामेन कालेन समावेशितं समाहितं काष्णेन मनस्तत्तु पुनर्मबाबुदस्यारान्मृगसुतमनुपरि शुश्राव इत्येवं दिगुटिर्वेदो विर्षिज्य मृगीं मातरं पुनर्भगवत्क्षेत्रमुपसंशील मुनिगण दयितं साल्व शालग्रामं पुलहस्त्य पुलहाश्रम कालंजरात्य प्रत्याजगाम तस्मिन्नपि कालं प्रतीक्षमाण संगाच्य भृशमुद्विग्न आत्मसचरा शुष्क पर्ण तृणवीरोधा वर्तमान मृगत्वनिमित्तावसानमेव गणमन् गणयन् मृगशरीरं तीर्थो दकन् क्लिन्नमुत्ससर्ज स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमस्यां संहितायां पंचमस्कंदे भरतचरिते अष्टमोऽध्याय श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अथ नवमोऽध्याय। श्रीशुक उवाच अथ कस्यचित् द्विजवरस्याङ्गिरः प्रवरस्य समदमस्तपः स्वाध्यायाध्यायनस्त्यागसन्तोषतिदीक्षा प्रश्रय विद्यानसूयात्मज्ञानदानन्दयुक्त स्यात्मदृशसुतशीलाचाररूपौदार्यगुणानवसोदर्या अङ्गजा बभूर्मिथुनं च यवीयस्यां भार्यायां यस्तु तत्र मास्तं परं भागवतं राजसि प्रवरं भरतमुत्सृष्टमृगशरीरं चरमशरीरेण विप्रत्वं गतमाहो तत्रापि स्वजनसङ्गाच्च भृशमुद्विजमानो भगवतः कर्मबन्धविध्वंसन स्मरण गुणविवरण चरणारविन्दयुगलं मनसा विदधात्मना प्रतिघातमासङ्गमानो भगवदनुग्रहेणानुस्मृतपो स्वपूर्व जन्मावलिविरात्मान्मुन्मत्त जडान्धवधीस्वरूपेण दर्शयामास लोकस्य तस्यापि अवा आत्मजस्य विप्रापुत्रस्ने अनुबन्धमना असमावर्तनान् संस्कारान् यथोपदेशं विदधान पुनीतस्य च पुनः शौचाचमनादीन् कर्मनियमान् नभिप्रेतानपि समशिक्षयन् अनुशिष्टेन हि भाव्यं पितुः पुत्रेणीति स चापि तदुह पितृ सन्निधावेवासध्रीचीनमिव स्म करोति छन्दास्यध्यापयिष्यन् सव्याहृतिभिः प्रणवशिरस्त्रिपदीं सावित्रीं ग्रैस्मवासन्तिकान् मासानधीयानमप्यसमवेतरूपं ग्राहयामास। एवं सतनुज आत्मन्यानुरोगावेशितचित्तः शौचाध्ययनव्रतनियम गुर्वनलश्रूषणाद्य उपकुर्वाणकर्माण्यनभियुक्तान्यपि समनुशिष्टेन भाव्यमित्य सदाग्रह पुत्रमनुषास्य स्वयं तावदनधिगतमनुरथा कालेन प्रमत्तेन स्वयं गृह एव प्रमत्तौ उपसंहृता अत यवीयसी दुष्सति स्वगर्भजातं मिथुनं सपत्न्या उपन्यस स्वयमनुसंस्थया पतिलोकमगात पितर्युपरते भ्रातर एतन्मत प्रभाव विदस्त्रय्यां विद्यामायेव पर्यवसितमतयो न परविद्यायां जडमर्तिरिति भ्रातुरसुन शासन निर्बन्धान् न्यवृंसत संत सच प्राकृते द्विपद पशुभिरुन्मत्त जड्डबद्धि रेत्यभिभाष्यमाणो यदा तद अनुरूपाणि प्रभासते कर्माणि च स च कार्यमाणा परेच्छया करोति विष्ठितो वेतनतो वा याञ्चया यादृच्छया योपसादितमल्पं बहुवृष्टं कदन्नं वाभ्यवहरति परं नेद्रियमेति निमित्तम् नित्यनिवृत्त निमित्तस्त्व सिद्ध विशुद्धानुभवानंद स्वात्मलाभाधिगमः सुदुःख दुःख सुख दुःखयोर्द्वन्द्व निमित्तयोरम्भा संभावित देहाभिमाना शीतोष्णवाद वर्षेषु वृष इवा ना प्रतांगपि न संघननांगा स्थंडिल संवेशनानुन्मर्दना मज्जनरसा रजसा महामणि परिभान विव्यक्त ब्रह्मवर्चसा कुटावृतकटे रूपवीतेनो रूपवर्षिणा द्विजातिरिति ब्रह्मबन्धुरिति संज्ञयातं जज्ञनावतो विचचार यदा तु परत आहारं परमवेतनत इह मानः सुभातिभिरविगयदार कर्मनिरूपितस्तदपि करोति कित्तुं न समम् विषमं न्यूनमधिकमिति वेदका कडपिण्याक फलीकरण
कुल्मास्थालिपुरीशाधीन्यपमृतवदभ्यवहरति अथ कदाचित् कश्चित् वृषलपतिर्भद्रकाल्यैर्पुरुष पुरुषपशुपालभतापत्यकाम तस्य हदैव मुक्तस्य पशोः पदवीं तनुचरा परिधावन्तो निशीथ समये तमसावृत्तायां नदिगतबसव आकस्मितेन विधिना केदारान् वीरासनेन मृगवराह दिव्या संरक्षणामङ्गिरसा प्रवरसुतमप्यपश्यन् अथ त एन मनद्यवलक्षणमेव वरस्य मवमृश्य भर्ति कर्म निष्पत्तिं मन्यमाना बुद्ध्वा रसनया चण्डिका गृहमतिर् गृहमुपनिर्निर्मुदा विकसितवदनाः अथ पणयस्तं स्वविधिना विशिच्या तेन वाचसाच्छादभूषणा भूषणालेपस्रक्तिलकादिभिरूपस्कृतं भुक्तवन्तं दोपदीपमाल्यं माल्यलाज किशलायाङ्कुरफलोपहारोपैतया वैशसंस्थया महता गीतस्तुतिपदङ्गपणवघोषेण च कुरुस्परुषुं भद्रकाल्या पुरत उपवेशयामासु अथ वृषलभराजपणे पुरुषपशोरसृगासवेन देवीं भद्रकालीं व्यक्ष्यमाणस्तदभिपत्रितमसि मतिकरालनिषिधमुपाददे इति तेषां वृषलानां रजस्तमास प्रकृतीनां धर्मद रक्त रज उत्सिक्तमनसां भगवत्कलावीरकुलं कदर्थीकृत्योपतेन स्वैरम्यरतां सा विहाराणां कर्माद्दारुणं यद्ब्रह्मभूतस्य साक्षात् ब्रह्मर्षितस्य त्रिवैरस्य सर्वभूतहृदयासुनायामप्यनुमत बालपलम्बनं तदुर्लभ्य तेजसाति दुर्विषेण दन्दयमानेन वपुषा सहसोच्चाट्टसैव देवी भद्रकाली वृषममर्षरोषावेसर भसविलिटभ्रुकुटविटपकुलिटदंशारेण लेक्षणातोपाति भयानकवदना हन्तकामे वेदं महाट्टहास समतिर्संरम्भेण विमुञ्चन्ति ततोत्पत्त्यपापीयसीं दुष्टानां तैनैवासिना विकीर्णशीर्णा गलास्रवन्तं मगशिगास्वत्मत्युष्णं सह गणेन पीतयातिना पानमदविफलचितोश्चैर्यतां सपार्षदैः सह जगौन्ननर्त च विजहारश्च शिरः कन्दुकलीलया एवमेव खलु महदभि चाराति क्रमः काष्णेनात्मने फलति न वा एतद्विष्णुदत्तमहदद्भुतं यद सम्भ्रमं स्वसम्भ्रमः स्वरिषच्छेदेन आपतितेऽपि मुक्तदेहाध्यात्मभावसुदृढहृदया ग्रन्थीनां सर्वसत्त्वसृदात्मनां निर्वैराणां साक्षात् भगवता निमिषाधिवरायुधेनां प्रपत्तेन तैस्तैर्भावैः परिरक्ष्यमाणानां तत्पादमूलकुतश्चित यमुपसृतानां भागवत परमहंस नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ दशमोऽध्याय। श्रीशुकोवाच अथ सिन्धुसौ वीरपतेरहुगणस्य व्रजत इक्षुमत्यास्तटे तत्कुत्पल्लिना शिविकावाह पुरुषान्वेषण समये दैवेनोपसादितः सद्विजवर उपलब्ध एष पीवा युवा सङ्घननाङ्गो गोखरवद्धुरवोढुलमलमिति पूर्वविष्टगृहीतैः सह गृहीता प्रसवमतदर उवाह शिविकां समहानुभाव यदा हि द्विजवरस्य सुमात्रावलोकानुगतेन समाहिता पुरुषगतिस्तदा विषमगतां सुशिकां रहुगणोपधार्य पुरुषान्निद्वहत् आहे वुढारा साध्वतिक्रमत किमिति विषम मुह्यते यानम् इति अथ त ईश्वरवचः सोपालम्बमुपा कर्ण्योपाय तुरीयाच्छङ्कितमनसस्तं विज्ञापयां बभूव न वयं नरदेव प्रमत्ता भगवन्नियमानुपथा साध्वेव वहामः अयमधुनैव नियुक्तोऽपि नरुतं व्रजति नानेन सह वोढुमो ह वयं वारयाम इति सांसर्गिको दोष एव नून मे कस्यापि सर्वेषां सांसर्गिकाणां भवितुमर्हतीति निश्चित्य निशम्य कृपणवचो राजा रहुगणोपास्तवृद्धोऽपि निसर्गेण बलात्कृत ईषदुत्थितमन्यो द्रविष्ट स्पष्ट ब्रह्मतेजसं जातवेद समिव रजसावृतमतिराह अहो कष्टं भ्रातर्व्यक्तमुपरिश्रान्तो दीर्घमध्वानेकभुजोहिरान् हुहिवान् सुचिरं नातिपीवान् सङ्घननाङ्गो जरसा चोपधृतो भवांसकेनो एवापर एते सङ्घटिन इति बहुभिः प्रलब्धोऽप्यविद्यया रचित द्रव्यगुणकर्माशयस्वचरमकलेवरे वस्तुनि संस्थान विशेषे हम ममेत्य नध्यारोपित मिथ्या प्रत्ययो प्रत्य ब्रह्म भूतूष्णीं भूततस्तूष्णीं शिविकां पूर्ववत् उवाह अथ पुनः स्वशिविकायां विषमगतायां प्रकुपित उवाच रहुगणः किमिदमरे त्वं जीवन्मृतो मां कतरथी कृतपतिशासनमतिचरस्य प्रमत्तस्य च ते करो मे चिकित्सां दण्डपाणिरिव जनताया
यथा प्रकृतिं स्वां भजिष्यस इति एवं बहवबद्धमपि भासमानं नरदेवाभिमानं रजसा तमसानुविद्येन वदेन तिरस्कृता शेष भगवत्प्रियनिकेतं पण्डितमानिनं स भगवान् ब्रह्मणो ब्रह्मभूतः सर्वभूतसुहृदात्मा योगेश्वरचर्यायां नातिव्युत्पन्नमतिं स्मयमान इव विगतस्मय इदमाह। श्रीब्राह्मण उवाच त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भर्तु समे स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्वा पीवेतिरासो न विदां प्रवादः स्थौल्यं कार्श्यं व्याधय आधयश्च क्षुत्रीड्भयं कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदशुचो देन जातस्य हि मे न सन्ति जीवनमृतत्वं नियमेन राजन् आद्यन्तवद्यद्विकृतस्य दृष्टं स्वसाम्यभावो ध्रुवैर्य यत्र तर्ह्योच्यते सौ विधिकृत्य योग विशेषबुद्धेर्विवरं मनाक्ष पश्यामयन्न व्यवहारतोऽन्यत् क ईश्वरस्तत्र किमीशितव्यं तथापि राजन् करवाम किं ते उन्मत्तमत्तजटवत्स्वसंस्थां गतस्य मे वीरचिकित्सितेन अर्थाकियान् भवता शिक्षितेन स्तब्धप्रमत्तस्य च पृष्ठपेशः। श्रीशुक उवाच एतावदनुपादपरिभाषया प्रत्युदीर्यवनिवर्य उपशमशील अपरतान्नात्मनिमित्त उपभोगेन कर्मारब्धं व्यपनयन् राजयान् अपि तथोवाह स च पाण्डवे सिद्धु सौवीरपति पतिस्तत्त्वजिज्ञासयां सायां सम्यक् श्रद्धयाधिकृताधिकारस् तद्हृदय ग्रन्थिमोचनं द्विजवच आश्रित्य बहुयोगग्रन्थसम्मतं त्वया त्वरवया वरुह्य शिरसा मादमूलमुपसृतः क्षमापयन् विगतनृपतिदेवस्मय उवाच कस्त्वं निगूढश्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमोऽवधूत कस्यासि कोत्र त्यैहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसिनोत शुक्ल नाहं विशङ्के सुरराजवज्रान् न त्र्यक्षशूलान् नयमस्य दण्डात् नाग्न्यर्गसोमा नीलवीतपास्त्रा छङ्के भृशं ब्रह्मकुलावमानात् तद्ब्रूह्य सङ्गो जडवह्निगूढ विज्ञानवीर्यो विचरस्य पार वचांसि योग ग्रथितानि साधो न क्षमन्ते मनसापि वे अहं च योगे स्वरमात्मतत्त्व विदामुनीनां परमं गुरुं प्रष्टुं प्रवृत्त किमिहारणं तत् साक्षात् हरिं ज्ञान कलावतीर्णं स वै भवान् लोकनिरीक्षणार्थ मव्यक्तलिङ्गो विचरत्यपि स्वे
योगेश्वराणां गतिमन्दबुद्धि कथं विचक्षेत गृहानुबन्धो दृष्टाश्रम कर्मत आत्मनो वै भर्तुर्गल्तुर्भवतस्